Hello everyone, welcome to Commodities Podcast. This is Rakesh Khanna from Mirae Asset Sharekhan. Today we have an update on silver. Based on our analysis, MCX Silver price is currently experiencing phase of profit booking but remains above the critical support level of Rs 95,670, indicating a bearish short-term trend. The crucial support level is at Rs 95,670. A breach below this level could lead to further declines, with potential targets identified at Rs 94,209 and Rs 91,338 level in near term. The key resistance is identified at Rs 97,770 level. The MACD indicator is anticipated to give negative crossover, which supports the bearish momentum in upcoming trading sessions. Thank you. नमस्ते, मैं राकेश खन्ना मीरे एसेट शेरखान की तरफ से आप सबका कमोडिटी पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। आज जिस कमोडिटी की जानकारी देने जा रहा हूं वो है सिल्वर। हमारे विश्लेषण के आधार पर MCX सिल्वर प्राइस वर्तमान में लाभ बुकिंग के चरण का अनुभव कर रहा है, लेकिन 95,670 रुपीस के महत्वपूर्ण समर्थन स्तर से ऊपर है, जो कि एक मंदी की आलंबिक प्रवृत्ति का संकेत देता है। महत्वपूर्ण समर्थन स्तर 95,670 रुपीस है। इस स्तर के नीचे एक उल्लंघन से आगे गिरावट हो सकती है, जिसमें संभावित लक्ष्य की पहचान 94,209 और 91,338 रुपीस है। ऊपर में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रुपीस 97,770 लेवल पर है। MACD इंडिकेटर की नेगेटिव क्रॉसओवर देने की आशंका है, जो कि बेरिश मोमेंटम के लिए सपोर्टिव है। धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.